Why do we greet people? Start with something, something with grace. Start something with praise. आप होता है कि आपका जो पहला इंप्रेशन है किसी पे भी वो किससे होता है? आपकी ग्रीटिंग से. द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन you leave on people's mind about you is your greeting. अच्छा, हमें आदत सी पड़ गई है बड़ा धीमा सा जवाब देने की. It's become a habit. And मुझे बात नहीं सही कर समझ आती कि when we are meeting someone और वो हमें सलाम करे तो हमें बड़ा धीमा उसका जवाब होगा वालेकुम सलाम, यानी आवाज भी अंदर से ही आएगी. And that to me doesn't represent the personality. हम जिस प्रोफेशन में हैं वहां इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट पीपल. आवाज है जी, आवाज अब आई जी. जिस प्रोफेशन में हम हैं हमारा तो टोटल डिपेंडेंस ऑन मीटिंग पीपल. एंड देन व्हेन वी मीट पीपल डू वी लीव अ इंप्रेशन ऑन देम. दैट इज द की टू आवर सक्सेस. दिस इज व्हाई व्हेनेवर आई गो I keep telling people and the young people and the students that show yourself when you meet someone, show some, that you are pleased to meet the person. अगर आप धीमा जवाब देंगे तो it means कि fine यार, ठीक है यार, so what, whatever, I don't care. तुम होगे कोई हो गया, I don't care. But that is not what you want to leave the impression with. So greeting, कहीं भी आप जाएं, वो doesn't matter, ऐसा लगे जैसे आपको खुशी हुई उस पर्सन से मिलके. कस्टमर और नो कस्टमर, आप देखिएगा कि वो पर्सन आपको फिर याद रखेगा. अदरवाइज वी मीट सो मेनी पीपल इन आवर लाइव्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर फेसेस एंड नेम्स. बट वी डू रिमेंबर पीपल जो हमें वेलकम करते हैं, जो बड़े खुशी से हमें मिलते हैं. सो वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, पीपल, दैट स्टार्ट बीइंग अ हैबिट ऑफ ग्रीटिंग people with energy, with excitement, and show that you are happy. And you see the change in how people then meet you again. मेरी पहली जो मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी. My first meeting with Ogen Beckett, this is 1996. थाईलैंड की बातें स्टोरी कैसे सुनाई, लेकिन उसमें जो एक मेन एस्पेक्ट था उस मीटिंग का, when I met Ogen Beckett and Peter Kells, this is May 1996, Bangkok. So जो मेरा तरीका है मिलने का, I'm always little bit loud, little bit excited. मैं काफी excited हूँ, मेरी आवाज में excitement होती है हमेशा. And I move with the pace, मैं चलता हूँ, मैं move करता हूँ. So I met them, बातें की, काम हुआ, we signed a contract, हो गया. उसी वक्त उन्होंने मुझसे contract sign कर लिया, बात गुजर गई. कुछ अरसे बाद मैंने ओगन से पूछा था, ये क्वेश्चन किया कि why did you decide to sign with the vendor, जो बहुत छोटा, you knew the vendor is very small. You're a Mercedes-Benz, you're a massive, mega blue chip company, and here you are signing a service contract with a very small vendor with 4 or 5 people only. What were you thinking? Why did you decide in favor of NETSOL? You know what his answer was? Wrong. I did not sign with NETSOL. I said, what do you mean? He said, no, we signed with Salim Ghauri. I said, why? He said, the way you met us shows your hunger. And we said to ourselves, this person will not fail. That is 28 years ago. I will never forget that. I will never forget that lesson in my life. It is how important, it's so critical that how we meet people, how we interact with them from start. So remember in your lives, start showing excitement, eagerness when you meet people. Same goes when we travel. When we travel, and meet people in the customer side or other side or our other regional offices, show excitement and energy. Anyway, this is important, but let me come back why we're here. Great, good to see you all. Now, this is not
a sermon, this is not a speech, this is not a lecture. I just want to interact with all of you. Let's interact. Let's share our experience of how we have worked, and then let's turn around and see how we manage our daily lives. So this is going to be an interactive session. Please work with me, talk to me, discuss with me. Let's ask each other, let's share with us. We have 1 hour. We have to work it very well. This is one of the first session I will hold with all of you. And inshallah ta'ala, 2024, we will make it a regular sort of a town hall where I will be coming out and start talking to you, start listening to you. Because for me, I need to have the pulse on the hand of the company, and you are the company. I need to know what you all are thinking and how you want to see your company. It's so important that what we decide when we sit at the management level, we'll take a lot of decisions. But those decisions need your pulse, your needs, your thinking, because this company is not going to go anywhere unless I have all of you work with me. You all have to work with me. You all have to be behind me. You all have to support me. Otherwise, this company will just be what it is today. That cannot continue. 28 years, we have to take this company to the next level now, mashallah. I am very satisfied what we have achieved to date. We have done well to build a very stable environment, a stable organization, an enterprise which is now well recognized globally. We are, alhamdulillah. We have built tremendous references in the world. Now we are invited to bid. In my early days, I have to go and look for the work. Now work comes to us. We have achieved a certain level of recognition in the world. So we have done that. We have done our homework. Maybe it took long, maybe it could have been quicker, doesn't matter in the past. But where we are today is important. Today we are in an amazing place to be. Alhamdulillah, we are very well settled in the global arena, in the Pakistan market, and of course among ourselves. We have achieved a lot of milestones to date, and I can go on with the list of milestones. But to me, I believe these milestones are enough for us to go to the next level. We have to now think bigger, have a bigger picture in our minds, and I believe that your management, because we just had a long 3 days in London at the highest level, we sat down together and we looked at and we felt that time has come for us to open up the horizon, look for more areas where we can be now useful. So all that is happening now. It's happening. We have agreed that this organization now will be moving to the next level. So, but that is not possible. That will not happen unless I do get the support of each one of you. You need to be behind me. And a basic example is what we have achieved in the last 2 weeks. February 5th was a very important day in the life of NETSOL. That day, we went live in China with our customer, GAC SFA. This customer is our first truly Chinese customer. Before that, in China, we have dealt with multinationals, companies from around the world. In China, they are our customer, and alhamdulillah, we did well. But first time, we got interacted with a true Chinese entity, a Chinese enterprise, a Chinese customer, and their way of working was very Chinese. Wasn't like anything else I've seen. All my work of 45 years of professional IT, I've never seen this kind of work attitude and expectation. I have never seen that before. Last year, I got involved with the customer because things were getting a little bit dicey, complicated. Customer was constantly unhappy. So I got involved and started working with my team. And at that time, it seems that we're not able to recover from this situation where we are. But kudos to the team. What a group of people I was lucky to work with. Amazing bunch of kids work
sat with me every day. Every day they were with me, and every day we gradually, slowly cleared out the difficulties with the customer, very slowly. And that was unbelievable. All my life for 45 years, I have not enjoyed such a work which I did for last 8-9 months. It was amazing, though very complex, very difficult, very, scary, very, creating a lot of tension. But that is what the fun was. Fun was to come out of the position we were in. And unbelievable group of people with me. In Lahore, in China, everybody worked with me, and every day we looked at each issue, and without getting panic. Nobody panicked in my group. That was a great feeling. That was wonderful to see. Wow, what can we achieve when we put our minds to it? What I'm telling you guys is important. The level of customer is changing. The expectation of customer is changing. They expect a different level. They expect a different kind of vendor with them. And great news is we are that vendor. We are the company which can take any challenge, and we can do whatever we believe we can. So we've done that. That customer went live February 5th. 4 days of intense work. Day and night teams were there. They migrated from old to new, and Alhamdulillah, we are live. Now that is a great work by every single individual. Unbelievable commitment, unbelievable dedication, knowingly that customer is going to create a lot of... customer said once in one of the meetings, there were bugs coming in, and he said, Mr. Ghauri, one bug is a crime. Not a single bug allowed to see. It's a crime. I'll shoot a Chinese if they do that. One bug. We were used to a long list of bugs. This I said, no, I don't want to see a single bug in the system. Good for us. We were up to the challenge. We were up to the challenge, and we were able to get it back. The customer, Alhamdulillah, today we're done. Then, mashallah, we went live in Korea. Again, a very complicated customer, taking long, but done it. So guys, we have done some wonderful work. We have done some amazing customer handling. I don't know many companies in Pakistan claim such a customer base, which we are now claiming. We are in an amazing position today. This organization, this company, this entity is in tremendous position today. So what happens next? Where do we go? What do we achieve? What can be done with this base we have built? I believe can be done wonders. Personally, I believe with all what we have got, we could be a very different organization next 5 years. This is why this session is important. This is why it's so critical, important that we change, our outlook differently. We start, looking at how we can change our work environment, how we can work very differently, because now expectations are very high. Expectations for the customer like change. And remember, inshallah ta'ala, we'll see more of Chinese customer now, because in China it's changing. Gradually, multinationals will give way to the Chinese management. Even in multinational, we'll see Chinese managers, and they will want to work with us with the same Chinese way of working, which we have learned. This customer has taught us amazing abilities. So with that, let's come back to today where we are. And this session is about leadership. And what comes to mind when we say leadership? And I think I want to open up the forum now. I spoke for a long 10 minutes already. What do we think when we say the word leader? Because to me, even if there are 2 or 3 people working under you, you are a leader. You are a leader for me, because now you are responsible for those 2 or 3 people. You are certainly now given the charge to work with these 2 or 3 people, or 4 people, or 5, whatever that number is small is. That's the start of your leadership career. How do you see that change in yourself? I think it's important, and this is what I have asked to arrange this session. How do we see ourselves in a shoe of a leader? A person who is going to take decisions on their behalf, a person who will allocate work, a person who will decide how those 2 or 3 people have worked. This is the subject of today, and I need all of you
to help me with this, how does it work? So first, let's be quickly raise hand who are the first time leaders who have just been moved to the position. So please raise your hands. Who have just moved to the leadership position. Who are the ones? आप में से कौन है जो अभी मूव हुआ है? आपका नाम? Muzammil. You have just moved to a leadership position? Lately, I was just leading one team. Okay. Now I am cluster lead of US. Okay, how many people work for you? Sir, 13 people. Mashallah, this is a big team. I'll come back to you, Muzammil. I want much smaller team now before I come to 13-man leadership. Anybody who has been given responsibility for a fresh team, 2-3 people now, not before that. मेरा फोन क्या है? अच्छा. All right, I'll come here. Yeah. So anybody who's the one who's just got the responsibility of leadership now? Anybody? They're all leaders. There's a clarification. Even if it's 2 people, they are looking after. I know. That's what I'm saying. Yeah, they're all leaders. Anyone who, and especially the recent ones, what I want to know, if you have first time given the role of leading a team, 2 or 3 or 4, whatever, it doesn't matter. Anyone can raise your hand? जी, नाम बताइए. Ali Raza. बताइए, what are you doing now? Sir, I'm leading the QE team. Okay. From the last 8 months. Okay. And I have 2 members which have the responsibility of managing PMO, Jira administration. So, Riza, how many years behind you before you have given the role of a leader? After 7 years. 7 years you work as a quality engineer, developer, whatever that, and now you are suddenly, as a team, now you are in charge of number of people. Am I right? So what comes to your mind when you have given a responsibility? I believe you understand it's a responsibility. सर सबसे पहले यही है कि टीम को हम इंगेज करें और एक बैलेंस एक एनवायरनमेंट दें, ठीक है, ताकि चैलेंजेस को फेस कर सके, ठीक है, और अपना एक अच्छा एक क्लाइंट को अच्छा इम्पैक्ट दे सकें कि हम क्विकली रिस्पांस दें, इस चीज़ में डिले ना करें, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आप विद इन द टीम मैनेज करें, वो आगे अक्रॉस द बोर्ड ना जाए, विद इन द बोर्ड हम इस चीज़ को करें ताकि हम एक अच्छा एक क्वालिटी रिजल्ट दे सकें. एक बात ये बताइए मुझे सब लोग, people, humans, are we perfect? बड़ी धीमी नो थी. As a human, are we perfect? No. Okay, good. I'm glad that we. So it is a challenge to work with people. सबसे मुश्किल जो हम सब का काम है, starting from my level to all of you, is that we work with people around us. And मेरी सबसे पहली पता आपको क्या होती है, strict जब मैं किसी से मिलता हूँ, कि जिससे मैं मिल रहा हूँ वो परफेक्ट नहीं है. The person I'm meeting is not perfect. मेरा पहला अपने आप से ये होता है. So when I do accept the person I'm meeting or interacting or working or leading or it's not perfect, you know what I do, Alisa? First of all, I look for their strengths and I ignore their weaknesses. मेरी सबसे पहली होती है कि इस बच्ची में strength क्या है? What is it that I can capitalize in this person? And what are the weaknesses I have to ignore? That's very important. Because remember one thing, you will never get anybody to be perfect around you. They will always, will have their own likes, dislikes, weaknesses, strengths. But my first role as a leader is always to look for the strengths of that person. All right. So first thing I do is very quickly figure out the strengths of the person and try to capture those, and then try to learn the weaknesses of the person around me. That helps me then build the person accordingly. How would you do that? Sir, we are identifying the weaknesses of our team member, which area is weaker,
I have to put work on it and improve their weaker part and give the task which areas is weaker from their end. A leader, if you do that, this is exactly what a leader does. As we agreed that we all have strengths and weaknesses, then if a leader is willing to work on the weaknesses of its team, that will be the leader will remember. Two ways of getting work done. The दो तरीके हैं काम करवाने के. एक है कि आप create a personality of a person which is always angry and to the task, and person को सिर्फ काम कराना है और person की कोई human emotions नहीं है कि you just always are thinking about the work and work to be done, and you're always very serious, and always your team is know that Ali Reza will be serious, Ali Reza will be very aggressive with the work because he wants to get the work done. That's one way of getting work done. Second way is working with the people. We work with our teams to get the work done. How does it differentiate? Very simple. When you are all the time aggressive and serious with your team, they will work. This is your job. They have no choice but to work with you. This is job. They may not like you, they may not like the work, but unfortunately, they have no choice because they got the job, they have to work. But that doesn't leave a good experience for people around that leadership. Doesn't leave a good experience at all. And the teams are not built for long term in that case. The teams are built then for the work, that work only. And when that work is done, teams try to disappear, go somewhere else. The teams are not built. There's a second way of working with your teams is how you look at those, and then how you're willing, as you said, that you want to work on their weaknesses. You understand they're weak, and you are happy to assist and convert that weakness into strength. That is the second way of building teams. That's the second way of working with people. Because as I said, and I repeat again, people are not perfect. And that is what the role of leadership comes to. That's how we are able to build a long-term team, a long-term association. Because do you want to be feared or you want to be respected? फिर इतना धीमा जवाब है. Do you want to be feared or respected? Respected. I think that's what you tell yourself all the time. When I walk back from my team, they talk about me with a smile, not with the make faces behind me. This is my desire. मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जब मैं आपसे बैक अपनी करूं तो आप शक्ल ना बनाएं मेरे पीछे. You still smile when I walk away from. That is my desire. उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं. उसके लिए मैं अपनी ईगो भी साइड पे कर दूंगा, मैं सब साइड कर दूंगा, because I want you to smile behind my back. I don't want you to make a face when I walk away, because I will walk away sometime. ये कहीं जाना है तो मेरी बैक आप पे आएगी. क्या जब मेरी बैक आप पे तो आपकी फेस कैसा बना? You say, oh, शुक्र है जान छुटी. So this is so important at the basic level of leadership. From day one, start building your persona in a way that people like you and respect you, because you're always there to assist. You're always there to help. You're not trying to just prove them wrong. Don't prove them wrong all the time. That's not a good habit. Don't try to belittle people. लोगों का मजाक मत उड़ाएं. As I said again, आपके अपने भी imperfections हैं, आपके अपनी भी weaknesses हैं. Don't pick on people's weaknesses. Always pick on strengths. That way you will get respected. That way you will be talked about. That way they will talk about you. Long time you have moved on, they will talk about it. अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में मिला हूँ. I met a lot of ex-NETSOLians in Sydney and Melbourne. And it was amazing. They were talking among themselves. They talked to me how they were remembering their time in NETSOL. And they had a very pleasant discussion. And they talked about their leaders. They talked about people who they worked with. And it was good to hear how pleasantly they talked about their leaders. Whoever they reported to,
ओ मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे चेंज कर दिया, मैं जो नेटसोल में करके आया उसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूं, मुझे ये मिल गया. एंड आई वाज हैप्पी टू हियर दैट. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दैट. बी रिस्पेक्टेड, बी लव्ड, डोंट बी फियर्ड. फियर के साथ आपका काम तो हो जाएगा, आप कोई लेगेसी नहीं छोड़ेंगे अपनी. So critical that you take each individual as a person, as a human value, and it's not just a work with you. It has to be a emotional binding with your team. It must be that, because with emotional binding, they will do anything for you. अभी काम किया हमने GSC में चाइना में, that was not normal work. That was not human work. That was extraordinary effort put by these people. Why would they do that? Because they felt they had the ownership of the organization. They felt that this is the way, this is their organization. That is why we were successful. We were successful simply because they all felt individually important to the organization. They knew they are important. They knew they have to contribute for this success. And we do that. And that's what, you all have to understand. How do we manage people? How do we get work done? And it doesn't mean that when you're friendly, you will not create a discipline. There are balance to that. Yes, we are friendly with each other, but we'll tell our team, this is how I want to work to be done. This is how I want you to do. This is my timing. This is what you come. This is when you go, how you deliver. Of course, we have to be serious in our discipline. Of course, we have to make sure that we respect the times. Of course, we respect the quality, you said, that we need to do that. So, okay, अलीरा से बातें हो गई. मुज़म्मिल, अब आप बताइए मुझे, आप 13 people you're leading. So, what's your experience? So we have to be. So we have to give them. पहले तो मुझे सर ने कहा SG का है, please. मुझे सर से ना उधर हो जाती है घबराहट. Right. First, SG कहिए. we have to give them emotional cover. अच्छा. Second, we have to be very careful about their well-being. Then we have to provide them very conducive work environment. Third, we have to develop responsibility in them for that work. So, if there is any challenge in any sort of thing, they will overcome it and they will come up with the solutions rather than coming with the problems to you. A leader is not just there to get work done. A leader is like a ustad. A leader is like a big brother. A leader is sometimes act like a father. मेरी एक्सपेक्टेशन लीडर से बहुत डिफरेंट है, लीडरशिप से. मेरी एक्सपेक्टेशन लीडर का रोल मेरे नजदीक बहुत ऊंचा है. इवन आपके 2 बच्चे आपको रिपोर्ट करें, देन यू सडनली you're a level where you are responsible for the well-being of those 2 people. दोनों चीजें go hand by hand. The company's well-being and the people who work with you, उनकी well-being is critical. अगर आपके लोग mentally healthy नहीं है, तो काम भी आपका नहीं कर सकेंगे. So their mental health is also your responsibility. You are given this task. जब आपको कहा गया कि यार आज से आप ये टीम को लीड करेंगे, तो suddenly the company is expecting you to be responsible for all aspect of that group of people. उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनका काम का, और अगर उनमें उनके इश्यूज हैं वर्क में, तो वो भी जिम्मेदारी आपकी कि आपने उन्हें ग्रूम करना है. यू हैव टू ग्रूम देम, यू हैव टू एजुकेट देम, यू हैव टू शो देम द वे, बट यू आर द वन हु विल शो देम हाउ टू डू इट. इट्स यू. एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सबसे कहूं कि एज यू प्रोग्रेस इन योर कैरियर्स, इन योर लाइफ, एज यू मूव ऑन, do not leave your skills behind. Do not let your skill go. Make sure you still work with your hand, because otherwise in few years time you will lose your skill set. So do not by any reason say, oh yaar main to ab sirf read karunga, main khud kaam nahi karunga. That will go against your own build up of skill set. Don't do that. कोई एज ही नहीं है काम रोकने की. Do not, doesn't matter how old you are, still कोशिश क्या करें, कुछ काम खुद भी बैठ के करें 7 बच्चों के, because that 2 बातें होंगी. एक तो आपकी अपनी स्किल मेंटेन रहेगी, दूसरा the team will enjoy working with you. So make sure you do not. I know sometimes you are very busy, I know that. मेरे पास ही घंटों बैठे रहते हो आप लोग. Still it is important that when you go back with your team, try to
लुक एट द कोड, सो चीजें खुद देखें, खुद जरूर इंटरेक्ट करें अपने, क्योंकि ये अपना आपका फ्यूचर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू हैव अ लॉन्ग, लकीली इन IT हमारी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है. देयर इज नो एज फॉर अस टू रिटायर. वी कैन वर्क वेरी लॉन्ग प्रोवाइडेड we are maintaining our skill set. So critical that when you move to a leadership role, don't think कि अब मुझे काम करवाना है, मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का. ये मत कहें अपने आप से. Find time also to do work yourself. That way, एक तो क्वालिटी बहुत डिफरेंट होगी आपकी, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. सब बच्चे will benefit from your quality of your work you do. The way you code, the way you design, the way you do, is much different than those kids. So make sure कि अपने हाथ हटा मत लें. Don't move away from the machine. Do spend a certain time of your day with the machine, on the machine, with the people. That way you will continuously be up to date with the technology, with the tool sets, with the skills, and of course जो बच्चे आपको देख रहे हैं, follow कर रहे हैं, they will benefit from your better technique. A better way of doing things, because obviously the experience you bring in, it comes over the period. Multiple बातें. टाइम क्या हो गया? Actually, what is the right mix between being firm and friendly with the team? What's the mix? It's a very good question in terms of how do we balance. अगर हम बहुत फ्रेंडली हैं अपनी टीम से, तो क्या वो फायदा उठाएंगे? क्या वो ज्यादा चमी हो जाएंगे? क्या वो फिर अपना काम में रख सकें क्योंकि मेरी तो दोस्ती है मेरे बॉस से? इज दैट द केस? ये हमारे जहन में आता है? आता है. सो वी डू गेट कंसर्न, राइट, कि हम चमी हो जाती है टीम से, तो वो थोड़ा लेवरेज लेंगे, थोड़ा सा. सो ये आपका सवाल ये है. ओके, so look again, nature has made us very smart. अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा दिया है, एबिलिटी दी है टू इम्प्रोवाइज, कहते हैं इसको, टू हैव टू इम्प्रोवाइज. सो आप लोगों को यू हैव टू keeping changing the stance with your people. If you feel that being friendly doesn't help, then थोड़ा सा I'll back off. And then try to give a message कि यार ये जो मेरी friendness है, ये इसलिए कि मैं I take you as my family, I take you as my team. But when it comes to work, we have to work. हमें काम करना है और आपको काम करके देना है और आपको क्वालिटी देनी है. अगर आप क्वालिटी नहीं देंगे तो I'm sorry, मैं I'll tell you कि आप काम सही नहीं करो. So both, it goes both ways. ये जो मेरे ग्रुप में आप लोग बैठते हो, मेरी टीम जब बैठी, मदद आ रहा बैठे होते हो, I think we go both ways. We are very friendly. लेकिन when it comes something wrong, we really go with each other. We talk about it. This is not right. So I believe that yes, we can balance it out. Firmness है जब when it comes to actual work और हम डिस्कस करें तो हम सिर्फ बिजनेस मीटिंग में हम सीरियस हैं. We have to be serious in our business. जब हम इकट्ठे बैठे हैं और वर्क एलोकेशन है और डिस्कशन है और जिम्मेदारी है और काम सही नहीं हुआ तो हमने उसे डिस्कस करना है. We will discuss कि काम सही नहीं हुआ. And we have to acknowledge that it is not well done or yeah, it is not rightly done. I believe कि एक लीडरशिप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. एक बात याद रखिएगा कि जब आपको असाइनमेंट मिली और आप असाइनमेंट कर रहे हो, आपकी टीम से करा रहे हो और क्योंकि आप लीड कर रहे हो, आप जिम्मेदार हो, तो इफ दैट असाइनमेंट गोज रॉन्ग, देन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? That's where you build confidence in your team. Don't be shy. Do not. मैं बताऊं आपको, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं. I made a lot of mistakes. My life is full of errors. But one thing was always in me. I always accepted my errors. I accepted my wrongdoing. I accepted my faults. I never said कि उसका कसूर था, मैं इससे नहीं चल सका. I always did that to myself. I'm not shy. मेरी कोई ईगो नहीं है क्योंकि मुझे पता मैं परफेक्ट नहीं हूं. I accepted my flaws. But one thing I did is when I accepted my flaws, I was quickly revisiting myself. कि नहीं यार, ये तो काम सही नहीं है. अभी भी एज ए CEO मेरी डिसीजंस परफेक्ट नहीं होती हैं. आप लोग मेरी हेल्प करते हो, हम लोग आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं मेरी डिसीजंस के बारे में. But I do revisit my decisions, and when things go wrong, I am the first one to say, whoa, it is my fault.
I am responsible. I do not blame my team for that. I think that's important for you guys. And then when things go well, when we deliver well, then what happens? Not just appreciate team, आप उन पे डालते सारा. Put on them because they are the one. उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपके बिहाफ पे उन्होंने सक्सेसफुल सबमिट की. This will change the issue. Be good at acknowledging. ज़्यादा करें acknowledge. Encourage करें अपनी टीम को. लेकिन as I said, when things go wrong, take the blame and then sit down and do re-evaluate. Okay, kiss left with yourself. कि I wish I would have taken more keen interest in जो काम था. अगर मैं ज़्यादा फोकस होता शायद ये गलती ना होती. If you do that, then they will trust you more. It's all about having the trust factor between yourself and between your team member. More they trust you, better they will work with you because that way they will then, So firm pleasantness, it goes in hand. It's a balance. We are very smart. We know when to stop, close out, stop, wait, and then tell them this is not the way we work. We have to guide them. We have to teach them. We are, as I said, a leader is a teacher. A leader is a guru. A leader is a father, a brother, and a head. Because they look at us as हमसे ज़्यादा देखा हुआ है. They know more than us, so they look at us. So all of you as a leader have a role of not just getting the work done, but looking after the people yourself also. Gee, let's open the forum again. Let's share some experiences here about how we have been successfully dealing or how we have not been able to deal with that. Let's see that. यार सिर्फ मैं अकेला बोल रहा हूँ, क्या हो गया भाई? जी, ना बताइए. Team challenge is ना important. अब तला. Imran. जी इमरान. I think team challenge is important. You should have to listen your team, and you should have a parties and dinner with your teams. But accountability is most important factor. Then because you cannot compromise on quality. You have a customer like MBFJ. Japanese people are not compromise on quality. So you should tell your team that everyone should be accountable. We do not have leverage that we will provide the customer faulty things. This is my point of view. So इमरान जो शेयर कर रहे हैं कि accountability बहुत important है. Yes, see this is a culture we built in. क्योंकि जब मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ मुझसे गलती हुई तो मैं अकाउंटेबल हूँ. See, I'm starting with myself that I feel accountable because I'm saying मुझसे गलती हुई. That's the first step to accountability topic up. And yes, Imran, our customers are going to the next level and they will want the best quality. उनका right है. Because we have chosen some of the best names in the world to be our customer. So they demand and they believe, not just demand, they believe that NETSOL will be the vendor which will give them the best service. आप पता है कि Mercedes-Benz ने 2 साल लगाए अपनी 12 कंट्रीज के लिए वेंडर चूज करने के लिए कि उनका जो नया जनरेशन सिस्टम होगा वो कौन देगा. हालांकि वो हमारे कस्टमर थे उससे पहले 5, 6, 7 countries में, but they still took 2 years to look around the world who will be their vendor for 12 countries. That was a big decision for them, massive decision for them. जो मुझे मैसेज मिले हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में जो मुझे मैसेज मिला ऑस्ट्रेलियन CIO से कि even Germany is surprised and impressed with how we are able to deliver to 12 countries. We are the only company in the Daimler's vendor list जिसने इतनी countries का system एक साथ बराबर deliver किया with success. So we did that. So expectations are very high, very very high. That's why first time I have heard the word of zero tolerance from you in 2005 when Breach 55 is failed and then we have put efforts on Breach 56. Do you remember that? And that zero tolerance policy on quality is very good. That I have heard from you. जीरो टॉलरेंस का कंसेप्ट बहुत क्रिटिकल. मैंने आपने पहले शुरू में कह दिया था कि हम अब डिफरेंट लेवल पे आ गए हैं. अब हमारा जो कस्टमर है वो अब हमें वो सोचता है कि NETSOL तो वाव, इट्स अ वाव कंपनी. बट आर वी वाव कंपनी? I believe that there is a lot of room to improve ourselves. We are not today. I'm not satisfied with our own work
as of today. I believe that we are more capable. We are much more capable. We have थोड़ा सा हमें और seriousness लानी पड़ेगी अपनी work environment में. It's so important that we get a little bit more serious. क्योंकि देखिए बात सुनिए, बार बार मुझसे पूछा जाता है कि इंडिया आगे निकल गया. मुस्तकिल मैं इस वर्ड से तंग आ गया हूँ. पूरी दुनिया मुझसे सवाल करती है कि why Pakistan is left behind from India. And मैं इसका कितना जवाब दूँ? उसका जवाब बड़ी सिंपल है. We can be the leader in the world. We can be. We are a big country. We have the capability. थोड़ा सा हमें और कल्चर चेंज लानी पड़ेगी अपने वर्क एनवायरनमेंट. We have to start looking at क्या हम थर्ड फोर्थ दुनिया में रह के सेटिस्फाइड है? Are we satisfied that we have done well? I am not satisfied we have done well. In the world की बात मैं कर रहा हूँ. I believe that there is a lot more capability in ourselves to do. This is why this session was so important. That time for us to change. क्या हम सिर्फ बातें करेंगे कि इंडिया से पीछे रह गए, या हम इसको एड्रेस भी करेंगे? Are we willing to address why we are left behind IT of the world? Well, we are as of today, but we can take the lead. उसके लिए थोड़ा सा चेंज ऑफ हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा. हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं. सवाल ये कि सिर्फ बातें करेंगे और रोएंगे कि इंडिया निकल गया, या हम इसको चैलेंज करेंगे एंड अपने आप को उठाएंगे एंड वेक आवरसेल्फ अप एंड देन focus on what we do best, and we do best. So this is why session like this will come handy. We'll talk lot more in the future also. हम मुस्तकिल अपने आप को चैलेंज करें, हम खुद रेस करें कि यार हमें गुंजाइश है. I want to hear from you कि नहीं हमें गुंजाइश है, हम अभी पूरे तरह नहीं कर रहे. So tell me कि गुंजाइश कहाँ, हम क्या करें, और वो आज से हम स्टेप्स लें कि हम भी दुनिया में लीड करें. लीड तो हम कर सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है. वी कैन लीड. अभी आप देखें, मैं आपकी क्रिकेट टीम की एग्जांपल देता हूं आपको. एक एक इंडिविजुअल आपका नाम शाहिद अफरीदी है, और ये बच्चा है, और बाबर है, और जुआन है. बट व्हेन दे प्ले एज ए टीम, वी डोंट सी कोहेजन. वी डोंट सी देम परफॉर्मिंग ऑन द फील्ड. क्या गलत हो जाता है इन बच्चों से? हालांकि इंडिविजुअली दे आर ऑल पीसीएल में तो ठा ठा ठा, और जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने तो ठप हो जाते हैं. सो समथिंग इज नॉट राइट इन द वे द टीम इज पुट टुगेदर. व्हाट्स रॉन्ग? टेल मी, क्या मसला है इसमें? अब वो साइड बोलेंगे, हमने बोला I may be absolutely wrong on that, but what I believe that the subject matter experts are not being involved in every aspect of the different horizons we are working right now. Okay. So once we need to open the new horizon, we need to engage the subject matter experts or the people who are having a knowledge and a study on that. Like अगर हम बिग डेटा की बात करेंगे, किसी चीज़ की बात करेंगे, we always, there is a good, this is good that we always engage people from inside, which is, I believe, is natural. People has to grow, but somebody has to give a vision. Vision can come from the board of directors, from board of a board, but again, the main how to streamline those things, like you are exploring new market, Middle East. I worked 14 years. I think you are yourself and other were there, but there is a disconnection in some of the people, like we are opening UK market, we are opening Middle East market. Who can provide more leverage, set of customers, set of things to the market? So everywhere I think there is a disconnection of the engagement, as well as the subject matter experts are probably not involved. This is what my thinking is. Fair assessment. ये जो आप बात कर रहे हैं, इस पे शायद एक वजह ये है कि हमने for very long time we focus on one vertical, which is asset and financing, and we at that time close our minds to any other vertical. Now that we are opening new verticals, what you said is valid. We have to get those domain experts if we want to explore. अब सर AWS पे हम पूरा एरिया बनाया है, and we brought in the people with that background, और उस पे टाइम लगा है, माशाल्लाह आपने बिल्ड कर दिया. So yes, we all agree with what you're saying, that we have to bring people with that background and with that knowledge and expertise to take us to the world. So that is already in the pipe.
ये ऑलरेडी एट द हाइस्ट लेवल जो आप कह रहे हैं, इस पे डिस्कशन भी है. हमारे HR का जो है ये दे आर वेरी अवेयर ऑफ आवर फ्यूचर नीड्स. तो ये ग्रेजुअली अब इंशाल्लाह ताला वी विल हैव दोस काइंड ऑफ पीपल helping us understand the market demand and how market works. Yeah, we'll do that. But जी आप बस ये लीजिए, इसकी आवाज आपकी नहीं आएगी तो. I would address that. I think there is a huge generation gap. There are a lot of people who are very old with this organization, and there are newcomers as well. So new generation is not getting aligned with the old one. So I think probably the new generation, I think that impatient attitude, and they don't have that winning attitude. वो hunger नहीं है, या probably the old one are not adapting their strategies. So there is a huge generation gap, what I believe. उस पे we should work on. That's one point. This is why we are here today. Yes. Precisely, I believe there's a generation gap. I understand that. The new generation is in hurry. When we were working, we took our time to learn and to adopt. So this is why these sessions will help the both sides. When we come together, both sides are listening to each other. नए बच्चे भी सुन रहे हैं और हम थोड़े से जो पुराने बच्चे वो भी अपना कंट्रीब्यूट करें. So definitely there is a gap, and थोड़ा सा कुछ हमें जल्दी करनी चाहिए और थोड़ा सा उनको सब्र करना चाहिए. आई थिंक इट हैज टू बी बैलेंस. अगर वो जल्दी में, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो एज उसके मुताबिक उनको बेचैनी है कि यार थोड़ा जल्दी हम आगे बढ़े. Whereas we at the end we say कि नहीं यार स्लो बेहतर है, तो थोड़ा हमें पेस बढ़ानी चाहिए. सो हमें ये गैप फिल करना है, हमें इकट्ठे काम करना. अगर एज ए नेशन हमने आगे जाना है, वी हैव टू गो फर्दर, तो हमें फिर ये गैप फिल करना पड़ेगा और अपनी नई जनरेशन को लेके चल. देखिए फ्यूचर इस जनरेशन का है, नई वाली का. मेरे लिए अब ये लोग लीडर्स हैं मेरे. आई वांट देम टू लीड अस, आई वांट देम टू टेल अस व्हाट्स न्यू टेक्नोलॉजी. मुझे तो ऐसे ऐसे बज़वर्ड्स मेरे सामने आते हैं कि मेरा दिमाग घूम जाता है, यार व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. द वे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, द वे इस रिवोल्यूशन हो रहा है तेजी के साथ. तो ये जनरेशन जो हमें आगे बढ़ाएगी. सो आई बिलीव दिस न्यू जनरेशन इज इंपॉर्टेंट. हमें उनको सीरियसली लेना है, उनकी नीड्स को समझना है और उनको एक्सेप्ट करना है कि इनकी जो हंगर, इनकी बेचैनी है, ये बेचैनी हम कैसे इनको सेटिस्फाई करें. आर वी सेटिस्फाइंग द बेचैनी एट द मोमेंट? नो, वी आर नॉट. लेट्स एक्सेप्ट इट. सो व्हाट डू वी डू दैट वी एक्सेप्ट एंड देन बेनिफिट फ्रॉम दिस बेचैनी. मेरा तो ख्याल है इससे फायदा उठाएं. लेट्स यूज दिस किड्स इन देयर माइंड, इनकी एनर्जी, इनका एक्साइटमेंट, इनका थॉट प्रोसेस हमसे बहुत आगे होगा. इन्हें वो चीजें नजर आ रही है जो मुझे नहीं समझ नजर आती. वो रात को मैं सैफ, मेरा 9 साल का बेटा, वो उससे प्रोजेक्ट आ गया, उससे करना था. अब वो पावर पॉइंट, अब मैं उसको देख रहा हूँ वो कर क्या रहा है. एट 9 एज में वो पावर पॉइंट मूव कर रहा है. मैं उसको दिखता जा रहा हूँ. I was so surprised how he was moving the mouse and कैसे ड्रॉप कर रहा है, पिक कर रहा है, चीजें कर रहा है. I couldn't imagine that at my 9-year age. Let's accept it. This is a different world. This new generation is very different. इनकी skills हमसे बहुत different है. So, well, I believe we have to go back. Again, I want to come back to very serious question on efficiency-wise. I'm not satisfied that we are, not that we don't work. Please don't take me wrong. We work hard, we work long hours, but that's what I don't want. I want us to be efficient, so we work within our hours and then go home. So what's not right with us? How can we be more efficient? I want that coming out from this group. What can we do to be more efficient, precise, and there's a lot more going to happen in the organization. But जब तक हम अपना घर को ऑर्डर में लेके आएंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे. We need to get efficiency better. We need to get productivity streamlined. How do other people get better productivity than us? I want to hear from that. What's not right in our efficiency? जी बताइए. Actually, I personally realizing that we try to control our subordinate, our colleague, when we are as a boss position or head of the departments. The most important is, I think, we have to empower. I want to understand the questions. Oh. अच्छा, ये कुछ मैं बुक्स लेके आया हूँ अपनी. ये बुक्स उनको मिलेगी जिन्होंने कुछ सवाल किए. जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया उनको तो बुक मिलेगी नहीं. तो जिससे क्वेश्चन किया, मेरे पास कितनी बुक्स हैं? ये बुक्स यहाँ से वापस नहीं जानी चाहिए. जी इधर आ जाओ. जी मैं इधर आ गया. SG, I personally I have been realizing that to be a more efficient as compared to the effectiveness is
we are lacking in empowering our subordinates or colleagues when we are heading the departments or we are as a team lead. We try to control our subordinates. When we try to control, actually it doesn't motivate our subordinates. So to enhance the motivation, we have to empower, we have to share knowledge with them, so they will be motivated and to give their best for the success of the department and the organization. So we are not letting them lose. पता आप क्या करें? हम उन्हें lose नहीं कर रहे, हम उन्हें छोड़ दे के जाओ करो. We're somehow trying to control them. So how do we let them lose? What do we do कि हम उन्हें छोड़ दे चलो करो और करके लाओ मुझे लाके दिखाओ? What do we do in our culture? I think it's again coming back to the culture of the organization NETSOL. How do we let the young mind lose for go and get things done? I think that's a question I will not answer now, but this is a good observation. Let's keep it here, hold it in our minds. How do we let loose the young generation so they can then show us the way to the future? First of all, as I said, let's accept it कि ये जो generation है नई वाली इसको हम मौका देंगे. I think that's very important. And at certain level आप सब ने माशाल्लाह अपनी contribution कर ली है. You have reached a status और ये merit पे आप लोग यहाँ पहुँचे जब भी बैठे हुए आप लोग जितने सीधे लोग यहाँ बैठे हैं, they all have risen on their merit. NETSOL alhamdulillah, I'm proud of that I see all the faces, they all are individually, they have worked very hard and they made their place in the organization this high level. So this is great. Now how do we now benefit from the next generation which is joining us, inshallah, and join us more? How do we benefit from their energy, mindset, their thought process? I think this is for you guys at the leadership level, that you have to open up and let them loose in terms of वो हमें guide करें. जी और बताइए. This is so far so good. जी यासिर को दे पीछे दीजिए पहले. ऐसे भाई. आपने एक बात की कि इनिशियली जो अब प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर वो इंडिविजुअल्स तो नजर आते हैं लेकिन वो एज टीम नजर नहीं आते. सो एक ना बड़ी एक पुरानी एक इंतखाब आलम जो टीम के साथ है, तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में आके हमसे एक बात शेयर की थी कि बेटा वर्क फॉर ईच अदर, play for each other. So this thing is missing in our team currently now. तो ये अगर हमारे कल्चर में आ जाए कि हम सब कुछ अकेले इंडिविजुअली जो है ना वो एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं कि जी मैंने ये कर लिया या मैं ये करना चाहता हूँ और उसका रिवॉर्ड भी ले रहे होते हैं. जब हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे तो आई थिंक हम एक टीम की तरह पंच वो जो है ना डिलीवर कर सकते हैं. थैंक यू. कल की एक मीटिंग थी जिसपे हम रिव्यू कर रहे थे, तो मैंने ये सवाल है तो उसमें मुझे कहा कि एक बच्चे में नाम भी भूल जाता, वेरी ओल्ड, कि जी मैं 2 साल पहले NETSOL में आया था और वन थिंग आई ऑब्जर्व इन NETSOL कि जब हम में से किसी को मुश्किल आई तो सारे आगे हेल्प करने लगे और हमने वो रिजॉल्व कर लिया. जब मैं पहले कभी भी था तो वहां पर अगर मेरा काम है तो मेरे पास कोई फटके नहीं कि तू तेरा प्रॉब्लम तू सॉल्व कर. कहता दिस इज अ गुड कल्चर इन NETSOL सो फार कि लोग एकदम इकट्ठे होते हैं एज अ टीम एंड हेल्प ईच अदर. आई वाज हैप्पी टू हियर दैट कि कहता है कि कोई जैसे हमारे बच्चे आ रहे थे तो एवरीबॉडी वाज हेल्पिंग ईच अदर और वो क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे. वो दैट इज गुड एटीट्यूड कि क्रेडिट पूरी टीम को जाएगा, एक इंडिविजुअल को जाएगा. और एक बात देखिए, मैं क्रेडिट एक इंडिविजुअल को दूंगा भी नहीं. जब भी हमारी विन होगी इंशाल्लाह वो टीम की विन है, एक की नहीं. मेरी विन नहीं है ये, मैं कभी क्रेडिट लूंगा ही नहीं आपका, ये आपका क्रेडिट है. जब भी आप जीत के आते हैं, जब ये जिसे हमने चाइना विन किया, कोरिया विन किया, ये विन पूरी टीम की मेरी नहीं है. I'm the last one to come forward and claim the victory. Victory तो सबकी टीम की है. So victories आई इसलिए कि we were working with each other, not against each other. अभी few minutes है और please मजा आ रहा है. जी बताएं, इधर लाए आप. What's up? मैं R1 से जना एसेंट में आया 2 साल पहले और एसेंट का कोई इतना नॉलेज था और मेरे पास 6 या 7 लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश आए थे. उनको इवन कि ये भी नहीं पता था कि रेंटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो वो अभी काफ़ी वो ट्रेन हो गए हैं. तो वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो कहते हैं कि बासित भाई 70-80 हज़ार के अंदर 9 से 9 काम नहीं होता हमसे. सर नीचे कर लीजिए, क्या बात आपकी सही है जी. जी 70-80 हज़ार के अंदर 9 से 9 काम नहीं होता. और उनके कुछ कलीग हैं जो कि NETSOL छोड़ के गए हैं, वो डबल पे गए हैं, तो वो डीमोटिवेट होना शुरू हो गए हैं. तो कंपनी वाइज HR को भी ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि वर्क बैलेंस और फाइनेंशियल साइड. Why we working 9 to 9?
नो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन. मैंने पहले आपसे कहा आप लोग कैन वी वही देखिए मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, आप भी सब बैठे हुए हैं और ये डिसीजन मेकर बैठे हुए हैं. हाउ कैन वी finish our work by 9 to 6 and then go home? How can we be more efficient and not work extra 3 hours? मैं ये सवाल करूँ आपसे. हम लोग की क्यू में काफ़ी इश्यूज हैं. रिलीज 24A भी चल रही है, कॉमन से आई है, काफ़ी इश्यूज हैं. मोर देन 600 इश्यूज जो है ना हम लोग के रिपोर्टों में, जो कि हम लोग फिक्स कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं आप? किस किस्म की? MBM मार्केट के लिए. MBM मार्केट की बात कर रहे हैं. कॉमन कोड का कॉमन कोड की बात कर रहे हैं. उसमें GSE ने बड़ा इम्पैक्ट किया है, जापान ने बड़ा इम्पैक्ट किया है, कोरिया ने बड़ा इम्पैक्ट किया. ये सारे स्टैट्स आपके पास होंगे. उसकी वजह से क्या है कि हम लोगों को वो डिलीवर करना है बाय दिस मंथ. और उसको डिलीवर करने के लिए फिर टीम को रिक्वेस्टिंग मोड के अंदर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये हो जाएगा. इवन कि मैं खुद उनके साथ लेट शीटिंग करता हूँ और उनके साथ बैठ के कोड भी डीबग कर रहे होते हैं. छोटे छोटे इश्यूज हैं लेकिन टाइम लग जाता है उनको रिजॉल्व करने में. दो चीजें सेपरेट कर दें. एक तो कंपनसेशन है, वो HR वाले सुन रहे हैं आपकी बात. ये उनकी जिम्मेदारी टू मेक श्योर दैट हमारी कंपनसेशन मार्केट के मुताबिक, दैट्स इंपॉर्टेंट. We work very hard, we educate ourselves and we need to be compensated. वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो HR इसलिए बैठे हुए HR. सेकेंड है वर्क. उससे मैं खुश नहीं हूँ. पर्सनली आई डू एग्री कि 99 के लिए तो जिंदगी नहीं गुजारनी. आई डू एग्री विथ यू. सो दिस इज वाई मैंने एफिशिएंसी पहले कहा था आपसे. आई पर्सनली बिलीव कि हमें एलोकेटेड 9 आवर्स, उसमें हम कितने घंटे एक्चुअली काम करते हैं, मुझे वो बताइए आप. क्या एक्चुअली 9 घंटे पूरी तरह हम एफिशिएंट करके करते हैं या हम थोड़ा सा टाइम इधर उधर भी गुजारते हैं? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मेरी टीम जो है ना, हम लोग लंच करने के लिए 1:30 बजे उठते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं उसके अंदर, और लंच करके फिर 2:10 तक जो है ना हम लोग एक काम करते हैं. इनका थोड़ा सा टाइमिंग ना, लेट्स मेक इट एग्जांपल. Thank you very much for sharing that. Let's take a note, average निकालें इनके अगले पिछले महीनों की और अगले how we working, and this is what I want to change. I want to change that. हाँ देखें, जब हम लाइव जा रहे होते हैं उसमें तो हम काम करते हैं 40-50 घंटे पे, बट दैट इज शुड नॉट बी अ नॉर्म. ये नॉर्म नहीं है. आपका काम नॉर्मल है, इसको नॉर्मल में 9 से 6 ही काम करना है. लास्ट फ्यू डेज ऑफ एनी डिप्लॉयमेंट, या ऑफ कोर्स you have to go live, तो आप काम करेंगे, but not normally. So we will discuss that. We will review इनकी averages. We'll review the time. Why we are working 9 to 9. Let's see, Shamresh, why there's so much gap, why there are bug. Let's see how we can work allocation को change करना. आपकी भी जिम्मेदारी, आप work allocate कैसे करते हैं? जब इशू ही क्यू के अंदर 100 आइटम है तो 6 बंदों को डिवाइड करके जो ना वो 12-12. So let's revisit the team. I 100% agree with you. और वो फिक्स भी करने हैं. वो we have to fix them. और कस्टमर को टाइम भी दिया हुआ है. So we will, but we have to revisit how do we allocate work, what sort of team structure you have got. हमने आपको कौन से बच्चे दिए, उनका एक्सपीरियंस कितना, that और बस. Obviously आपने कहा बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, आपने कहा ये फ्रेश बच्चे हैं यार, यही वक्त उनके सीखने का. अगर ये अभी नहीं अपने आप को करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ देन हाउ विल दे बिकम लाइक यू? आप तो नहीं बनेंगे. तो थोड़ा सा जो मेरे अर्ली डेज में याद है कि एक्साइटमेंट थी काम करने की, सीखने की, वो करने की. सो बोथ साइड गोज, हाथ में हाथ जाती है. इनका ये बेस्ट टाइम है, ये सीख लें. जो सीख लेंगे उसके बाद फिर ऑब्वियसली एक डिफरेंट लेवल आ जाएंगे, फिर वो अब जिंदगी गुजारेंगे. बट आई बिलीव कि हमारा सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. हाउ डू वी इंप्रूव वर्क एलोकेशन एफिशिएंसी? हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारे जो एलोकेट काम है उसमें ही हम काम करके जाएं, चाहे कि कब एक काम कर दें, मतलब वो टाइम पे लगता है कि 6 बजे घर जाएं. आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू गो होम एट 6. फैमिली को टाइम दे, माँ बाप को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे, बीवी को लेकर घुमाए यार. जस्ट डू दैट. लेट्स नॉट स्टे इन द ऑफिस आफ्टर 6 PM. जी सेकंड पॉइंट है, 2 पॉइंट हो रहे हैं छोटे से. एक है हम लोग अपने सीनियर को लूज कर रहे हैं. रिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए. दोबारा बोले आवाज ये. सीनियर को लूज कर रहे हैं कंपनी. रिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए कि आप अपने सीनियर को ना जाने दें. जैसे भी उनको रोके, उनको मार्केट में थोड़ी सी ज़्यादा मिलता है तो वो लीव कर रहे हैं. और थर्ड पॉइंट है कि आप लोग जो ना वो लाइफ के प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ डिनर लंच हर चीज़ करते हैं. मेंटेनेंस की तरफ जो ना वो बहुत कम है. किसको इंकरेज करते हैं? जैसे आपने कहा कि GSE की पूरी टीम को किया, आपने पिक्चर्स बनवाई, सारी कुछ किया, कोरिया, जापान, ऑल की. मेंटेनेंस में जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर सिर्फ लीड्स, PM और क्लस्टर हेड रह जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा टेकर करें. अगर मोटिवेट नहीं करेंगे, everybody is equal and I agree with that. Everybody, देखें आज आपको बिठाने का मकसद भी यही था
कि मैंने कहा था ना पल्स पे हाथ होना चाहिए मैनेजमेंट का, तो जो आप बातें बता रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सेकंड बताइए, क्योंकि 12 बजे मोटिवेट नहीं करेंगे ना, तो अगर पूरी टीम को 6 दिन काम करवाया है और संडे वाले दिन भी उसको कॉल करके कहते हैं कि जी P1 आ गया आप देखें, वो कहता है कि जी मैं तो घर से बाहर हूँ, तो आप आ जाए 10 मिनट में आ जाए, 15 मिनट में आ जाए। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो 4 दिन अच्छा काम करेगा, 5वें दिन ब्लंडर करके चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा ताकि उसे दोबारा बुलाए ना। मैंने लास्ट टाइम भी पता क्या बात की है, जब मेरी बीवी से बहुत चाय बनवाती है तो इतना चाय में बनवा देता हूँ मैं, ताकि उनसे चाय ना बनवाए, वो ऐसा होता ही है। मैं बड़ी चाय अच्छी चाय बनाता हूँ, वो कहती है चाय बना दो ऐसी, बनाए तो वो अच्छा बच्चा हूँ, फिर यार मैं थक जाता हूँ तो मैं दूध डाल देता हूँ। जी I think that level of excellence is missing, जो हम efficiency की बात करें ना उसे अचीव करने के लिए। अगर हम 9 आवर्स में से लाइक एक 1 आवर की ब्रेक है और 7.5 आवर्स भी काम कर रहे हैं और उनमें हम एक्सीलेंस के साथ काम करें, तो हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो मिसिंग है। और वो जो फिर मैं ये नहीं कह रही, मतलब हर टीम का डिफरेंट वर्क एथिक है और हर बंदा डिफरेंट तरह से काम करता है, लेकिन वो एक्सीलेंस आई थिंक मिसिंग है अभी। क्योंकि आपने क्रिकेट की एग्जांपल दी, वहाँ पे भी जो बात हो रही थी, मे बी दैट प्रैक्टिस इज मिसिंग, मे बी दे आर नॉट प्लेइंग एट दैट लेवल जिस पे उन्हें करना चाहिए, और हम भी शायद उसी में लैग कर रहे हैं। देखिए, मैं जो आपने कही, मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ, क्या 9 से 6 काफी नहीं है अपना काम करने के लिए? थोड़ा सा हम लेजरली हैं, हम टाइम को इजी लेते हैं, वी डू टेक दैट। ये कल्चर आप चेंज कर लेंगे तो आप 6 बजे घर चले जाएंगे। आपने टाइम कर कि यार मेरे इतनी चीजें मैंने करनी है, इतने वक्त फिक्स करने, मेरा ये असाइनमेंट है, मैं पूरे लग के करके घर जाऊंगा। तो थोड़ा सा हमें भी बस चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू, कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, और हम सब उसमें हैं, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट। मैं किसी पे फिगर पॉइंट नहीं कर सकता, मैं करूंगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ग्रेजुअली इस कल्चर को हमें चेंज करना पड़ेगा, लेजरली। देखिए, हमें लुक, वी आर पेड, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, वी गेट, मुझे भी आप कभी सैलरी दी तो इसलिए मैं खड़ा हूं, I'm here, मेरी जिम्मेदारी आपसे बात करना, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टॉक टू यू एंड अंडरस्टैंड आप क्या सोच रहे हैं, एंड सो गुड टू हेयर फ्रॉम यू एंड फेयर फ्रॉम यू। सो नाउ व्हेन आई गो बैक, मैं सोचूंगा तो मैं अपना जॉब पूरा करूं, सही करूं, तो अगर मैं अपना जॉब पूरा कर लूंगा तो आपको भी बहुत फायदा है, और अगर आप अपना जॉब सही करेंगे तो पूरी कंपनी को फायदा है। सो आई स्टिल क्वेश्चन, हमारी एफिशिएंसी अभी भी एट पार नहीं है। प्लीज थिंक अबाउट इट, हाउ डू वी कन्विंस दिस टीम वर्क कि यार अपना फोकस कर लो काम में, फिर जो मर्जी करो, let's finish your work and go away. All right, अब देखिए, ये लास्ट सेशन नहीं है, so don't worry, आपके जो क्वेश्चंस हैं, park them, keep them, write them, inshallah ta'ala we will organize more of these sessions. I love it, I really enjoy talking to you, so we'll plan more. ये फरवरी है, मार्च अप्रैल more, let's meeting, and then उस तक आप और तैयार हो के आइएगा प्लीज। I do want, like you said, please raise this concern, ये कैसे रेस करेंगे तो we can then sit back and think, अच्छा यार, how do we improve? I want NETSOL to be the best organization in Pakistan. I want NETSOL to be the company जिसको सब आना चाहे। अभी हम नहीं हैं, but we can do it. We can make it the best company of Pakistan where everybody wants to work. I'm just not talking about financial. देखिए, financial position वो एक we are a public company, but what about the environment? What about the work ethic? I want to prove that.